Welcome, guys. We've had one heck of a contest today. We got to see an old classic IPL मैच हमने देखा 112 रन को डिफेंड किया गया आज ऐसा लग रहा था श्रेयस अय्यर के अंदर रिकी पॉन्टिंग आ गए थे ऐसा लग रहा था इट वाज कोर ड्रामा पीक सिनेमा राइटिंग बाय जय शाह it had everything if you could say नमन शाह दैट इस मैच के अंदर हमें सब देखने मिला वी got to see a crazy innings from a youngster in from KKR. We also got to see a comeback from Yuzvendra Chahal, who was mostly off color throughout the tournament, and we also got to see a few lusty blows being hit by Andre Russell, but unfortunately the task was too much for him to finish the game off. क्या लगता है नमन? What can Calcutta make of this failure? Nothing, honestly. It wasn't about Calcutta putting a foot wrong. It was about PBKS doing everything right to defend that total. Honestly speaking, Calcutta ने अच्छे से ट्राई करी है पेस करने की इनिंग गलत शॉट की चॉइस हो सकती है बट एट द सेम टाइम उन्हें पता था कि कोई रश नहीं है बहुत कम स्कोर है 120 बॉल में तो आराम से हो जाएगा तो दैट्स हाउ दे वर ट्राइंग टू प्ले जैसे छठी विकेट गिरी उसके बाद आप देखोगे तो थोड़ी हड़बड़ी में वो खेल रहे हैं बट छठी के पहले तो आई इट डिडंट सीम लाइक कि केकेआर इज लूजिंग तो आई कांट से कि मतलब उन्होंने गलत खेला बट एट द सेम टाइम प्रॉप्स टू अय्यर प्रॉप्स टू चहल आज सुबह ही मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा कि हर टीम के पास कोई तो ऐसा स्ट्राइक बॉलर है मुंबई के पास बुमराह फिर क्या हाँ चेन्नई के पास नूर पीबी के पास कौन सा स्ट्राइक बॉलर है सबके सब लाइक दे आर नॉट स्ट्राइक बॉलर्स दे आर And बॉलर्स today Chahal हिटिंग लाइक decided to पोस्ट make a विकेट्स comeback. एंड चहल वाज लाइक आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग Oh, but अब Chahal, the best wicket out of the lot was मतलब दो थे. एक आई थिंक उन्होंने जहाँ पे रमनदीप को आउट सॉरी रिंकू सिंह को डिसीव करके फ्लाइट में आउट किया और उसके पहले आई थिंक हु वाज द पर्सन दैट गॉट कॉट एट बैकवर्ड पॉइंट ऐसे आई थिंक रमन ओनली नहीं रमन गॉट आउट बिहाइंड एट स्लिप्स वो जब स्वीप मारने का ट्राई कर रहा था पैडल स्वीप और और श्रेयस श्रेयस दौड़ सो आई थिंक के वो कट रहा अंक्रिश स्ट्रेट गॉट आउट हो आउट दैट वे मे बी गया हाँ सी आई लव श्रेयस कैच आई लव करेक्ट रिंकू वाला स्टंपिंग हाँ अंक्रिश बाटलेट ने पकड़ा था वो बहुत बहुत क्रेजी बॉलिंग था एंड आई थिंक वी हैव टू गिव लाइक अ शाउट आउट टू द पंजाब न्यू बॉल बॉलर्स आई थिंक रिदम उन्होंने सेटअप किया पहली ओवर में मार्को यानसन ने सुनील नारायण को आउट किया एंड देन आई थिंक द पर्सन हु वाज इन डेब्यू ही गॉट बाटलेट ने आउट सेकंड किया या ही गॉट डिकॉक आउट सो आई थिंक इट वाज 7 फॉर 2 बाटलेट रिव्यू पे नहीं डेब्यू पे नहीं है ही वाज बाटलेट आई ऑन थिंक डेब्यू प्लेड फॉर वन पंजाब मैच किंग्स सॉरी सो अच्छा बिकॉज नहीं नहीं आई थिंक ही केम ऑन एज अ इम्पैक्ट सब मे बी दैट डजंट काउंट एज अ no डेब्यू but he played the first IPL match no he was batting also he scored 15 20 runs दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई गेस इम्पैक्ट सब डज नॉट काउंट एज अ डेब्यू मे बी हाँ बट नहीं ही प्लेड वेल और आई थिंक वेरी वेल brilliant प्लेड captaincy. We have to give it to Shreyas. Now, Naman, I would like to ask you one question. Do you think Shreyas has in him the potential to lead India in the future after Rohit? नाउ मतलब बड़ी he's won the Vijay Hazare Smat Syed Mushtaq Smat is Syed Mushtaq he's won the Irani Cup he won practically everything there is Everything. to win as He's Mumbai won the IPL captain. also last year. So at that moment, I don't think it's a question. See, giving Surya the T20 captaincy is okay. I understand, but It's a thing because he's not there in the setup, right? I hmm, think post the World Cup. Take you go on, please. Say. but honestly speaking, Shreyas Iyer is on another plane. Central contract तो उससे मिल रहा है, but side by side, if you genuinely want to look at an ODI captain in the middle between Rohit and Gill, because see, we know Gill is going to become captain at some point in time. That is like a guaranteed at this point because he's a marketable face. Even if he's not a good bat, say whatever people want to say, he is the marketable face of the BCCI. तो उन दोनों के बीच एक फिगर जो नॉट ओनली मैच विनर है बट ऑल्सो अ प्रॉपर पीआर फिगर इज श्रेयस अय्यर like he knows how to handle the media he knows how to handle his bowlers he's a great gun batsman himself तो at that moment in time I feel कि अय्यर से बेहतर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज क्या पंड्या देखो पंड्या इज नॉट प्लेइंग टेस्ट Correct. तो तो वो एक वन डिमेंशनल हो गया उसको T20 के भी लीडरशिप ग्रुप से हटा दिया है तो फिर बचा क्या ओडीआई तो वो Correct. प्रॉब्लम वी कांट हैव थ्री so it's better to have the likes of Shreyas who's a proven match winner in both long form and short form
कि पता है यार, लाइक 5-6 साल तो खींच ही लेगा अच्छा खासा. तो आई Correct. एग्री. And बट आई डोंट they थिंक नाउ. आई हैव बीन बिलीविंग इन दिस फॉर अ ईयर नाउ. see, I think the thing is, अगर उसको कैप्टन बनाते भी है तो इट बी पोस्ट द 27 वर्ल्ड कप जहां पे रोहित शर्मा का फ्यूचर अभी भी थोड़ा ग्रिम लग रहा है 27. सो द डिसीजन माइट बी टेकन लेटर बट 100% ऑन विथ यू व्हेन यू से दैट ही इज अ बेटर कैप्टन देन शुभमन गिल एंड गोइंग फॉरवर्ड 6-7 years डाउन द लाइन मे बी गिल कैन बिकम द कैप्टन बट वो बीच में जो 4 साल है आई थिंक श्रेयस विल रिटर्न. और अगर बात करें श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन लास्ट ईयर ही वन द आईपीएल विथ केकेआर. They removed him, and today he got his revenge. If you look at the post match, like Iyer and Venki speaking, Venki means not Venkatesh Iyer, but Venki, the CEO of KKR. What it seems like is honestly, see, one, of course, KKR did not retain him, but second, it also feels like the valuations were off. When like Shreyas says he wasn't valued enough, it's not on the basis of respect, but I rather feel on the respect of the money, where I think KKR must have valued him at somewhere around 20 crores, thinking Correct. at max he can go for 23, which they would have been able to afford. Going for a 27 with a, and see, no one expected Punjab to empty one-fourth their, what do you say, purse on one player, but they did so, and they did so correctly, right? कि श्रेयस से बेटर तो मिलने नहीं वाला उनको. तो बढ़िया काम किया है यार. Now that we've spoken enough about Punjab Kings, let's move on to Calcutta. Uh, I think the spin twins Sunil Narine and Varun Chakravarti did manage to pick up a lot of wickets among them. और काफी अच्छा स्टार्ट रहा था आई थिंक पावर प्ले में एट द एंड ऑफ 6 overs they were somewhere around 50 या 55 for one. तो उसके बाद आई थिंक समवेयर that's been their entire problem throughout the season कि their middle order is not clicking. अगर click कर रहा है तो hardly एक दो मैच में कर रहा है. So going forward I think they need to figure out how should their approach be. वेंकटेश अय्यर आज नहीं खेल पाए बट रिंकू सिंह हैज बीन ऑन एंड ऑफ. रमनदीप का और रसल दो तीनों का फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है. सो ऑल इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अजिंक्य रहाणे एंड ड्वेन ब्रावो टू आंसर. But I think they are a champion side and they might bounce back. Let's see how it goes. Now, The problem I feel is with backing Russell, honestly. Speaking, like, now it's been what, 7 matches? 7 matches of which I think four he's gotten to bat and not performed. So at that moment in time, I feel कि अगर तुम इतना ही रसल को बैक कर रहे हो तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं उसका बैकअप होना ही चाहिए, which I don't see them having. अभी रोमन पावेल आया है, so at that moment I don't know वो कितना चलेगा. but तुम्हें लगता है he will be replaced? Highly doubtful. और नहीं, कोई है I भी तो नहीं. the way IPL इसलिए तो अभी they brought in Powell, but I think even that is for next season, considering that if Russell decides to move away from the IPL for a bit, because it's very clear the IPL is no longer his game. Correct. Yeah. So, तो कहीं ना uh, कहीं if he moves forward maybe. so I think अगर बात करें केकेआर की तो दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ मिक्स राइट नाउ कि क्या व्हाट्स द फ्यूचर लाइक फॉर देम. डू दे हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर सुनील नारायण and Russell as we mentioned so many times before on this call, but I don't think they have the only option they'll have is to find someone in the auction and let them go maybe. But let's see how this goes. You need two players to replace Sunil Narine. To have one a gun opener who can smack sixes, and second to have a mystery spinner. चलो mystery spinner तुम्हारे पास चक्रवर्ती आ गया, Correct. but तुम्हारा ओपनर कौन? Correct. So all agree. मुझे सिर्फ एक बात बता. अभी कल के मैच की बात करें अभी ना. Throughout this entire week, first SRS made a comeback, then Mumbai made a comeback, then CSK made a comeback yesterday. We saw Punjab defending the score. Uh, all in all, if we can say, IPL is IPLing now. The script writer is back. I think ICC से छुट्टी लेके एक महीने के लिए अब वो यहाँ पे आ गया है. So I just want to ask you what to expect tomorrow. Tomorrow we've got Rajasthan versus एक कुछ चेक कर लेते हैं. Sorry guys, हमारी It's टीम DC, थोड़ी. DC, DC is at home. It's Delhi versus uh, Rajasthan. Rajasthan, and Rajasthan is coming on the back of a loss, a huge loss to RCB and DC. You know what happened against that match in against Mumbai, right? So, क्या expect करना चाहिए and quickly what to who is your player to watch out for?
See, if Karun plays, honestly, Obviously, Karun, yes. because I was just looking at DC's Instagram and Hemang Badane was say praising Karun, and you could still see the spark in his eyes. ऐसा नहीं like if you see most Indian players, 80 हो गया भाई next match देखी जाएगी. With him, it was you could see that spark कि नहीं अभी और करना है. I missed out on a century, which is what Correct. you need from a batsman. तो 100% भाई करुण नायर खेल रहा है तो करुण नायर तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है मेरे लिए. From बट from अदरवाइज Rajasthan, Archer versus Karun could be a great contest to watch. Bumrah या was नो making a नो आई comeback. आई हर्ड राजस्थान एंड मेरे दिमाग में हमेशा सडनली रियान पराग आ गया और मेरा मुंह बिगड़ा. आई एम उसको तो सॉरी. प्लेयर टू नॉट वॉच आउट फॉर होना चाहिए, बट ठीक नॉट है. वॉच आउट फॉर. So for me, if I am saying obviously Karun would be, but then I would obviously like to watch KL Rahul come in and bat because last match the onus was on him to make Delhi cross the line, but he was unable to do that. And given the form in which he is this tournament, कल देखने में तो मजा आएगा. And from Rajasthan side, I would like to see how Sanju Samson makes a comeback because last match as a captain he failed. As a batsman he failed as well. He was not able to convert the start. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्विकली. नमन, कल कौन जीतना चाहिए, दिल्ली या राजस्थान? I really want Delhi to win because then they will stick with the like. See, I understand they're backing JFM, but they also need to back Karun. And if they win tomorrow with Karun playing a good role, that means Karun gets a long rope बट and डू we यू थिंक might फैफ just see कम्स him in the बैक Indian टुमारो? series. No, ही I इज don't think so. इंजर्ड, The राइट? extent, नहीं, ही yeah, इज the इन. extent of his injury is still unknown. So okay, so I think one Oh, more chance to Jake Fletcher McGurk. hmm, So for me, अगर मैं बोलूँ तो I would obviously I know that Delhi is gonna win tomorrow, but I'm hoping that Rajasthan wins because मुझे अभी वो चाहिए, वो क्लटर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, ऐसे प्रॉपर टेबल में. ऐसा ना हो कि दिल्ली ऐसा टॉप 2 में फिनिश गारंटीड हो जाए, मुंबई चेन्नई की कमबैक के लिए स्कोप ना रहे, ऐसे सब. नाउ दिस इज द स्क्रिप्ट दैट वी आर यूज्ड टू राइट प्री कोविड yeah, आईपीएल. no, no. But see, Chennai is right now running on a 3% chance Chennai maximum. is not, ऐसा वो Chennai is चीज है. not, yeah, sure, surely not. But SRH are practically out of ऐसा, the game at this point. no, I mean it depends on who wins between Mumbai and Hyderabad on Thursday. सो True. बोथ बोथ टीम्स हैव वन, तो अगर एक जीतेगा तो फिर वो बिल्ड कर सकेगा दूसरा आउट. Hmm. But otherwise, very true. I hope Rajasthan wins because उनका वो momentum वापस आएगा. But at the same time, मुझे like just for Karun, I have no like I love Aksar in his करेक्ट. everything, but right now I करो. really wish the best for Karun. If he scores another 50 and with the fluency that he did against Mumbai, so maybe he's guaranteed a trip to England later in Yeah, June. that's what I hope Yeah. because see, Rohit is not performing, and if Rohit again decides to rest himself, we need a good opener. And even if he doesn't open, you promote Shubman up. You have a player like Karun at 3 or KL whatever at 3. You see, the thing is KL can bat at number 3. Yeah, जैसे भी होगा, you need a number 5 or number 6. At this point of time, Karun would just have a place in the 11, not an opener spot, not in the middle, और जहाँ खिलाए वो खेलेगा. 100%. Let's see. Let's hope for the best. Thank you guys. Thank you for watching this video. We'll be back with the preview of the match tomorrow and the review of today's match.